Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society and the Journey of Knowledge named AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series. Thank you. Thank you. Really, we are grateful to you that due to your overwhelming support, mentorship, knowledge, and experience, this journey is continued to the infinite. Today, our milestone is 1773. Thank you for, again, thanks who has inspired us, which has inspired us to conduct more than 800 webinars in last year, recent year. So thank you again. I would like to welcome Dr. Murli K, Dr. U. Brahmanathan ji, Datan ji, Sri Ramdas PV ji, Dr. Aarti ji, and would like to invite Dr. Vishnu Prasad Sharma ji for his welcome address. I hope his connection is not there. Professor V.K. Agnihotri sir, pranam. Welcome. Yes, sir. Namaskar. Namaskar. It's a great pleasure that we are going to conduct a new webinar on the topic teaching methodology according to Kerala state. It's really a wonderful topic, and we are knowing nothing about it as our dignitaries are here, and they will guide us, they will inform us the way they are making the teaching methodology there in their state. Of course, may it be related to Sanskrit, may it be related to the Ayurvedic teaching or education department. The idea is that the one thing is that a matter of language. The other thing is the understanding of that language by the other language knowing students or candidates. That becomes more and more important, because we cannot limit ourselves only in the state level population. So anyway, we are going to learn a lot because the big dignitaries are here with us, especially our Murli sir, who had been principal, and again we have got some this. Brahmadattan sir, Aarti ji. Brahmadattan sir is also with us, and right. Aarti Prabha is also with us, Yes. along with our Shri Professor Ramadas PV. So all are just going to decorate our today's evening this webinar with their very distinguished lectures and their knowledge, experience that will be taught to us. Thank you so much, and over to Professor Sharma for further conduction. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to request our beloved Professor Ramdas PV sir for stage coordination, invitation to the speakers, Professor Ramdas PV sir. Good evening to one and all. Our first speaker is going to be Dr. Murli K. He is now the Chief Editor of Kottakkal Ayurveda Editing Department. He was retired from government service, and he is the son of Raghavan Timulpad sir, a great scholar of Ayurveda, has written so many books in Malayalam as well as in other languages also. A great promoter of Ayurveda. And Murli sir, I don't have to explain much on him. He is a great scholar of Ayurveda with a lot of basic principle knowledges in him. And he promotes the old method of learning Ayurveda, not simply the latest translation methods. Sir uses the Vyakhyanas in his teaching, in his explanation, and all the Darshana points also he explains during the classes. So that is one of the important methodology that which all the colleges in Kerala follows from so many years. And Brahmadattan Nambudiri sir is a great renowned Vaidya in Vishachikilsa. He has taken his BAMS and other degrees in the modern university, but he is more interested in Mukhamukam learning and the orthodox way of learning the Ayurveda. Today, sir will be enlightening us with what is the advantage of Mukhamuka learning, because that is very, very important. In the Vedic period onwards, it is being practiced in India, and all Vedas, Puranas, Samhitas, everything is being memorized and kept in the brain without any instruments.
big memory card our brain is. So sir is going to speak on that. And Arati, she is my student, but great scholar. She is going to speak on the same subject in a different way in her perspective as a student for the past so many years in Kerala. And myself, I'm Sanskrit teacher. I love the learning methodology of Mukhamukam, especially Parayana, Samhita Parayana, and Samhita Vyakhyanas. Ashtanga Hridaya with Indu, Hemadri, and Arunadatta Vyakhyana learning is the best way of learning. Simply you sit and read also, it is very good. So that is the methodology the Kerala follows. And it is very clear that all the orthodox Ayurvedic families in olden days, wonderful way of learning Ashtanga Hridaya. They were not simply learning for the sake of learning. They were learning for the sake of practicing. Every student will be sitting in front of the doctor and the doctor will be observing the patient and he will ask them to recite particular slokas. They will recite slokas and he will explain. Everything is practically based. A wonderful method of learning. One of my institution principal, Dr. Vasudevan Nambudiri sir, he is one of the greatest scholar. He studied in one of the family like this. He used to tell that his teacher, Narayanan sir, Narayanan Sambudiri sir used to make him read the slokas in front of the patients, and he will tell that Vasu, you tell this sloka. Immediately he has to recite that particular sloka immediately, without delay. If delay comes, immediately he will tell something. So such a way they all learned that one. So we are going to get such a great methodology of learning Ayurveda in Kerala. It's a proud of Kerala. Kerala is always on the top of Ayurvedic teaching and learning, and Ayurvedic families have done a lot of wonderful works. Now you will understand from Brahmadatta Nambudiri sir also. Last one seminar was there, he was treating a Visha patient. So they are all meant for helping the sufferers. So we will listen. Murali sir first. Murali sir, please, I personally invite you for this subject. Please enlighten us with your teaching methodology, that which is going to be uplift our Ayurvedic science. Sir, please. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Okay. I don't know how far I can communicate with you on the teaching methodology, especially related to Ayurveda. Nothing is taught actually unless it is learned. Otherwise, teaching is just a lecture. But we can call it a lecture as teaching only if it is learned by the students. So in educational sciences, recently they call the activity as teaching learning together. Two words are fit together and the activity or the procedure is a single one with teaching in the one end and learning in the other end. So it is actually a single process where there is in between there is the communication, proper communication. So coming to the history or three phases of this teaching learning methods, we can see from the history. In the beginning, it was oral tradition. The disciple learns from the guru, reciting sloka or reciting the sutra, and Shishya, disciple, hearing it and learning. The guru will explain the meaning after reciting a sloka or communicating a sutra. So actually this term sutra, we all know its definition. Alpaksharam, Asannigtham, Saravad, Vishwadonmukham, Astobhyam, Anavadyam cha Sutram, Sutra Akshobhyam, Anavadyam cha Sutram, Sutra Viduhu. So it has a minimum number of words, Alpaksharam. Asannigtham, though it has the number of words are limited, it should not
produce any doubts. It is very clear. Saravat, there is meaning, several meanings that is to be brought out by interpretations. There is meaning. So it is Saravat. Vishwadoन्मुखम. It can also be interpreted severally according to the situation, according to the times. So the same sutra is interpreted differently in different centuries according to the need or the applied aspect. So these definition of sutra applies to even a sloga also. That is why we find sutra sthana, the area where the basic principles are narrated in AYUSH Samhita. We call it as sutra sthana. Atra artha sutritaha sarvaha pradanyandehi sarvataha. Atra arthaha sutritaha. All the principles of Ayurveda are codified, summarized in this area of the textbook. So, in later parts, we can see that this Sutrasthana is quoted. Sutrasthana Vithim Smaran. So, in this context, you should think about what you have learned in Sutrasthana. So similarly, whatever is there in the remaining sthanas, remaining portion of the text, all these reference, all these ideas, concepts, applications, in some way or other way, are related to Sutrasthana. So while teaching, as far as possible, we have to quote or refer Sutrasthana always. So in teaching Chikitsa, we should say how this applies to, how this concept is mentioned in Sutrasthana. So one example I can quote is in Jwara Chikitsa, Trishnagalpalpamushnabu Pibedvadaka Bhajure Talkabham Milayan Nitwa Trishnamashu Vinirhare. In Amajwara, if the patient feels thirst, it is advised to give warm water. Trishnak alpalpam ushnambu pibet vadaka bhajvare. Tal kabham vilayam nitva. It will liquefy the kapha. Trishnamashu vinirhare. The thirst is also relieved. So while teaching this portion, we have to refer to what is mentioned in Sutrasthana also. Devanam, Pajanam, Kanthyam, Purushnam, Lakushnam, Astishodhanam, Hitma, Atmana, Anila Sleshma, Sadhya Shuddhi Navajure, Kasama Pinasashwasa, Parshwarikshuja, Shasyade. In Sutrasthana, 5th chapter, Dravadravya Vichariya, the qualities of warm water, Ushnambu, is mentioned. The same thing, the same concept is applied in a diseased condition. So, in wherever possible, while teaching or learning anything mentioned in Chikitsa or Chikitsa or whatever is mentioned in Nidhanasthana, Chikitsasthana, Kalpasthana, and Uttarasthana, we have to look for how it is related to the concepts mentioned in Sutrasthana. That will make the idea better, and that it is the duty of teacher to relate every portion of the text to Sutrasthana. That can be the way of teaching. So historically, we can see that there are 3 traditions: oral tradition, textual tradition, and institutional tradition. As we know, in the beginning, it was oral tradition because the knowledge systems evolved even before the script or alphabet was invented. So as in the case of Vedas actually evolved and transmitted through
the oral tradition during several centuries. It is even before the invention of script. So that was the history of oral tradition. It is, of course, oral tradition is important, and that is why we call Vedas as Shruti. So even Charaka considers Shruti as a synonym of Ayurveda. Sushrutaha means who has listened well, his guru. So this Sushruta or Srudavan means a learned person. So learning is by listening the words of gurus, following his advices. So oral tradition is in the beginning, it is very much important. Then comes the textual traditions. Before text came later in a later period. So we find the beginning of textual documentation in the initial chapter of Charaka Samhita. So Atreya taught all the 6 disciples, and he asked the students to document his teachings and read it in the next day. So it was what was written by Agnivesha was considered the best, even though there were 6, Atreya had 6 disciples. So that moment, the moment is described very vividly in Charaka Samhita, as that shows the importance of documentation. So texts were written in a later period. After the oral tradition, we can find the textual tradition. Texts were used as a tool for teaching and learning. So there are Prakarana Granthas and Ubari Granthas. Prakarana Granthas are elementary texts. Ubari Granthas are higher texts or reference texts. So both these are used in education. We start learning something with Prakarana Granthas, and higher texts or references or reference texts are used for more knowledge or in a later part of the educational system. So in the concluding verses of Ashtanga Hridaya, Acharya Vagbhada says, Edal Pathan Sangraha Bodha Sakta. So, Sobhyasta Karma Vishaka Prakambya. Agambayatyanya Vishalatandra Vidabhiyogan Yadi Talna Chitram. Edal Pathan Sangraha Bodha Sakta. This has to be learned referring the Ashtanga Sangraha. This text, Ashtanga Hridaya, is an elementary text, and Ashtanga Sangraha is considered as a higher text. So wherever one feels any doubt, wherever the disciple feels that something more has to be learned, at that time he can refer Ashtanga Sangraha. So Vagbhada authored both these books. Actually, he authored Ashtanga Sangraham in the beginning. Later, he concised it further to have an elementary text for Ayurveda. So that is why this Ashtanga Hridaya is followed in Kerala as an elementary text. And apart from Ashtanga Sangraha, there are so many commentaries to the Ashtanga Hridaya text, and writing commentaries is a continuing tradition in Kerala. Actually, we can see a particular period of Sanskrit commentaries and a period of Malayalam commentaries, and the later in this century we can also find English commentaries also from the Kerala Ayurvedic scholars. All these commentaries are also
used as mentioned by Ramdas sir. Commentaries are also used in teaching. Commentaries cannot be considered as a literature something lower. Actually, commentary is also an original, unique work. It also postulates some new ideas. For example, it is from Chakrabani we learn about the different nyayas of Dhatu Parinama, the Kshiradhati Nyaya, Kedaragulya Nyaya, Khalekabodha Nyaya. All these are actually postulated by Chakrabani Datta in his commentary. So commentaries also contributed several things. We cannot neglect commentaries, and commentaries cannot be considered as secondary. So it is a primary literature that has to be learned along with the main text. So for a beginning, the Mula Grantha or the text itself is taught and learned. In later, it is learned again along with the commentary. So the Vyakhyana, the term Vyakhyana is also very much important. Vyakhyana Vishesha Pratipattihi. Particular learning or specific learning can be achieved only through Vyakhyanas. So Vishishtam Vyakhyanam, we can also call Vyakhyana as Vishishtam Akhyanam. So it is something specific. So Vishadam Akhyanam can also, the term can be interpreted as Vishadam Akhyanam also. The Vishadam means lucid explanation. So all this emphasizes the importance of different commentaries in teaching and learning methods. So the textual phase is also important. With text we can start learning, and different texts starting from Ashtanga Hridaya, learning Ashtanga Sangraha, and other Cambodians like Sahasra Yogam or Chakradattam. These are also available for as a guide book or also a desktop books for formulation. So in earlier courses like Vaidya Kalanidhi in Kerala, there are only 2 books in the syllabus, Ashtanga Hridayam and Sahasra Yoga. As you know, Sahasra Yogam contains so many formulations of different kalpanas which are very popular in Kerala. So after learning the basic principles, one can learn the Cambodians having the drug formulations used in different diseases. Bhaishajaratnavali, so many Yoga Ratnakaram, so many textbooks are there which are mainly Cambodians of drug formulations. So texts are also important. Texts are also taught and learned through words. So the oral tradition is maintained in textual phase of education also. So the textual procedure, the oral procedure is not discarded in textual tradition also. Each text represents different schools of Ayurveda. So in earlier periods, the Varanasi or Benares, they were following the Susruta school. So in some other states or in some other centers, Charga Samhita may be followed. So text represents different schools of Ayurveda also. So we belongs to the Ashtanga Hridaya tradition, Ashtanga Hridaya school of Ayurveda. We can call the Kerala Ayurveda.
in associated with Ashtanga Hridaya. So texts are also a tool for teaching and learning. So in the later phase or in the modern era, the institutional tradition also came up. Institutions are also important. So because the Gurukula system has several limitations. Of course, it has got many merits, but it also has several limitations also. So we are getting only a single guru in a Gurukula, but in institution, there are several gurus, several teachers specialized in different areas. Also, there are facilities for the clinical learning, the drug manufacturing area, the Rasashala there is. So institutions face that is also important. So the institution also includes, or the institutional phase also includes both the oral tradition and textual tradition also. So in new era, we cannot limit our education to oral tradition or just to textual tradition. Institutions are important. Institutions, there is a particular rules and regulations there are. So the standard can be kept to a high level or a desired level in institutions, but that we cannot expect from gurukulas, or if we remain in oral tradition itself, such a standard we cannot expect. So this institutional phase also started in ancient period itself. The Takshashila, Nalanda. In Takshashila existed nearly 1,000 years. So in Takshashila, it is more or less similar to a Gurukula, because each guru got only 2-3 disciples. So they stayed there. Guru stayed in single small rooms, and disciples approached him. So he took 3 or 4 or 5 disciples and taught. So such was the system in Takshashila. So because of foreign invasions, Takshashila was destroyed. So to reciprocate, the Nalanda University, Nalanda came up. There we can find a very distinct type of institutional way of teaching and learning. So there were large lecture halls, and there were facilities for practical training. So it was almost similar to a modern college. So the institutional way of teaching came up even in ancient period. Nalanda existed in 5th century. As we all know, the Fahian, Chinese traveler, Fahian came to Nalanda, and he learned the Mahayana school of Buddha. Also the Yogachara is the school of Buddhism that was prevailing in Nalanda, and Fahian approached the Shilabhadra, the institutional head of Nalanda, and actually you can see in YouTube a film on Fahian, not Fahian, Huyan Singh, and we can listen how Huyan Singh talking to Shilabhadra in Sanskrit. Their communication is given in the film in Sanskrit language. It is very interesting to see. So this institutional type of learning was also
existed in ancient period. So there are a particular way of teaching, particular methodology affiliated to a particular institution. So that way also came up in Kerala also. There were smaller Gurukulas in ancient period. Kodungalur Gurukulam, Kandalur Shala. These are the Gurukulas existed in earlier centuries, some 17th or 18th century. But in 20th century, there were institutions came up. Punesheri Nilakantha Sharma, he established a Sanskrit college in 1888 at Pattambi in Palakkad district. P.S. Warrior, the founder of Aryavaidya established Aryavaidya Pathashala. In 1970, the King of Cochin established an Ayurveda college. In 1920, actually, the teaching of Ayurveda started in Sanskrit college, Tripunithara, the capital of Cochin, princely Cochin state. It was Ayurveda was a department in Sanskrit college, but later the scholars understood the limitations of teaching there. So there has to be a herbarium, practical training has to be incorporated. So the Department of Ayurveda was separated from the Sanskrit college in 1959, and it started at the Royal Guest House of King of Cochin, and later it was shifted to a permanent campus in 1973. The hospital was also started in 1969. So the institutions with all facilities came up in the 20th century. So this is the history of teaching Ayurveda in Kerala. So we can see that different methods were also incorporated in different phases of teaching. The Vyakhyana Lakshanam, Padacheda Padarthascha Vigraho Vakyayojana Akshepasya Samadhanam, Edat Vyakhyana Lakshanam. That is the constituents of a commentary, actually. Padachedam Padartham Vigraham Vakyayojana Akshepasya Samadhanam. These are the essential constituent parts of a commentary. So that itself can be considered as a teaching, learning method. For example, if we take a sloga, what we have to do first, we have to identify the words, independent words in that sloga. Thereafter, padarthaha. The pada has to be identified because it will be in sandhi. Two words are joined in sandhi. So we have to split it up. So what are the words, independent words in a sloga has to be understood first. Thereafter, padarthaha, meaning of each word has to be learned. Then comes vigraha, how the compound words are split up and what will be the meaning. The meaning may change according to the samasa, karmadhare samasa, talpurusha samasa. So there are different kinds of samasas, combinations. So the samasa decides the meaning of the compound word. So that has to be learned. Then comes Vakya Yojana, or the Anvaya, the prose order. The sloga has to be made in a prose order. Only then we can have the better understanding. So while writing in a sentence or making a prose order from the
sloga, we should have the karta, karma, kriya, everything has to be understood. So that is made easy through agamsha, by questioning, by the who did. First, we have to find out the kriya of the sloga. Then we have to look who did it, who is the karta. Then we have to look for the object or the karma. In such a way, the prose order is made out from the sloga. Thereafter, the total meaning comes up, and that total meaning can be questioned. So then, what can be the answer? Akshepasya samadhan. So akshepam means purvapaksha. The idea contained in a sloga has to be questioned. So there may be some questions from disciple or student who is learning. Otherwise, the guru himself can ask questions to the students, or he himself motivate the students to ask questions about the concept imbibed, included in a slogan. So the guru can ask the students, disciples to discuss and find out the answer. If the students cannot answer, then guru himself solve the problem. So this is meant by akshepasya samadhana. So this actually is the process of vyakhanam, commendation. But this also can be considered as a teaching learning methodology. So this is, I think, has to be involved in the teaching, whatever may be the subject. In Kerala, there are some, as I mentioned earlier, there are several commentaries. There is one commentary called Sarartha Tarpanam, written by Kaikulangara Ramavariyar, which is based upon this. That means Padacheta Padarthascha Vigraho Vakyayodhana Akshepasya Samadhanam. In this way, each sloga of Ashtanga Hridaya he wrote, and that commentary is called Sarartha Darpanam, used by several generations of Vaidyas in teaching and learning. Actually, Ramavariyar has wrote another commentary also. So he has written two commentaries. One Sarartha Darpanam, and the other one is Bhava Prakasham. In Bhava Prakasham, he has just given the meaning in Malayalam. After each sloga, the meaning is given. But in Sarartha Darpana, this process is used in commenting each sloka. Padacheda Padarthascha Vigraho Vakyayodhana Akshepasya Samadhan. So Anvayartham, Bhasha, Saram, in such way we can see different arrangement of the commentary in Sarartha Darpana. So that itself can be used for teaching and learning Ayurveda. So these are, in a summary, the methodology of teaching Ayurveda. So if I speak more, others will not get enough time for explaining their part. In addition to this, Tantra Yuktis can also be used in teaching and learning process. Adhikaranam, Uddesham, Nirdesham, Nirvajanam, Hetvartham, Yogam, Pratesham, Prayojanam, all these 32 Tantra Yuktis can be employed in teaching, learning process, but I am not explaining this at this juncture. So let me complete this. Excellent, sir. Great. Really, you are great, sir. Very nicely explained and very in simple language, sir. Great.
Agnihotri sir. Thank Really, you. no doubt, it's a wonderful, and it's a most understandable to all the teachers, students, and whosoever is interested to learn, because the way he taught padasya padyo padanamba artha padartha, or especially what I got one thing, Vishidam Vyakhyanam Akhyanam iti Vyakhyanam. This is Right. one thing I got for the first time. What is the literally meaning of Vyakhyanam? That is Vishidam Akhyanam iti Vyakhyanam. So literally it touched all the deepest sense of the words and its meaning. Even a single letter itself. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you very much. Now I would like to invite Professor Ramdas ji Yes, to sir. invite next speaker. Now I invite Brahmadatan Nambooതിരി sir. He will be speaking on Mukhamukam. It's a wonderful method of teaching in olden times in Kerala, especially the Kerala Vaidya families. So Brahmadatan Nambooതിരി sir, please. Thank you. Thank you. I will, my language of both languages, English You and can speak Hindi, in Hindi, are sir. both, So everybody will. No problem. both are worst. So I will try to talk in Hindi first, because I think whatever the languages, whatever the shastras of India, of Bharata, should be treated with the Indian languages, Bharatiya Bhashas, which has the motherhood of Sanskrit. Because many padas, many words should not be clearly translated in English and explained. And I don't know that much of scholarity in English. Of course, Hindi is also very poor. Still, I will try to explain in Hindi. I think it will be more easy for me. Is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Sure. Sure. तो मैं यही कहूँगा कि मुरली सर जी ने बहुत बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरह इसका जो विधान है, क्रम है, ये हजारों साल से हमारे यहाँ जो प्रस्तुत था, ये केरल का, सिर्फ केरल का ही ऐसा है ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो वेद का परंपरा जब से शुरू हुआ है वहां से ही होता है। तो लेकिन केरल का इतना ही है। मैं केरल के बारे में थोड़ा ज्यादा कहने के लिए मुझे बताया था, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा कहूँगा, क्योंकि जो लीनियज जो है हमारा, वेद का लीनियज है, बहुत पुराना है और बहुत ये भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। इसलिए जो भी विद्या था केरल में, जो भी सिखाते थे, उसमें बहुत ज्यादा वेदाध्ययन का जो क्रम था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जैसे वेद का जो पठन होता है तो अक्षर का अर्थ ही ऐसा है ना, जिसमें अक्षर नहीं होता है, कमी नहीं होता है, वही अक्षर होता है। तो उसको कैसे आप लिखेंगे? लिखना मुश्किल हो जाता है। लिखेंगे तो आप आ लिखेंगे तो आपको आ भी कह सकते, अ भी कह सकते, आ भी कह सकते, तो कौन सा शब्द होगा? लेकिन आप सुनेंगे तो वो वैसे ही कह पाएंगे। तो यानी कि जो शब्द का, यानी सुर का, जो शब्द का जो भाव है, वही से ही विद्या आता है। अक्षर को ईश्वर भी कहता है, अक्षर को शब्द की कहता है, शब्द को ब्रह्म ही कहता है, क्योंकि शब्द ही सबसे पहला जो भूत रूप में प्रस्तुत हुआ, यानी कि शब्द का परमाणु से ही आकाश भूत का उत्पत्ति हुआ। तो वही से ही, यानी कि वही हमारा सबसे क्या कह सकते हैं, बुनियाद है हमारा जो शास्त्रों का, सबका शास्त्रों का। तो वो जो ओरल ट्रेडिशन है, यानी कि सुन के, सुना के, पढ़ के, पढ़ा के जो होता है, उसमें क्या होता है कि इतना क्लैरिटी होता है कि 1-2000 पहले क्या शब्द कह रहा था, वही शब्द अब भी हम उसी तरह मिमिक कर सकते, या आप ये कह सकते, दोबारा उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि जब आप एक चीज का, एक बात, एक ज्ञान का, एक पीस ऑफ नॉलेज को आप दूसरे को देते हैं, तो वहां क्या होता है कि कभी कभी गलतियां हो सकता है, कई तरह का गलतियां हो सकता है। एक परीक्षा दिखाता है, यूट्यूब में दिख सकते हैं कि कुछ लोग 10 लोगों को दिखाते हैं, पहला वाले को एक कुछ बताते हैं, तो 10वां जो आदमी आता है तो बहुत डिफरेंट रूप में उसको पहला जो जिसने बताया वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो उसमें से ही पता चलता है कि जैसे जैसे हम उसमें जो सिखाने में जितना ज्यादा श्रद्धा नहीं देते हैं, यानी वो क्या कहते हैं ना, हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तब तक उसका जो नॉलेज होता है, उसका जो ज्ञान होता है वो तो आसानी से उसमें से चल जाता है। इसीलिए ये ओरल जो सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना था, क्योंकि श्वास भी एक थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते थे। मेरा नाना जी तो सिखाते थे, तो वो कहते कि वेद में जैसा वेदाध्ययन का जो विधान है वैसा ही श्लोक को पढ़ना है। तो मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कहने के लिए योग्य भी नहीं हूँ, ज्ञानी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं जो उन्होंने दिखाया वही बताऊंगा। तो वो जैसे कहते हैं कि इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्थिरता और श्रद्धा। श्रद्धा, स्थिरता, और कहते हैं दोनों को मिला के क्षमा भी कहते हैं। ये जिसको होता है वो सीख जाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? एक, किसी को भी कोई सिखा नहीं सकते, इतना ही कर सकते, को दिशा दिखा सकते, वो खुद सीखना है। तो वो सिखाने वाला से ज्यादा वो दिखाने वाला है। इसीलिए आचार्य को आचरण करने के लिए इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि आचरण करके ही सीखना है। वो आचरण देखकर, सुनकर, समझकर सीखना है। इसलिए आचार्य को इस तरह भी मानना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो वो मेरा एक जो मेरा मेरा जो विद्या का अभ्यास हुआ था उसका थोड़ा एक परिचय देता हूँ, वही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मेरा जो शब्द है उससे ज्यादा अच्छा है कि इन्होंने उन्होंने जो किया है वो वैसा ही कहना, कि एक ही टाइम पे आना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेट, बहुत क्या कहता है, पंक्चुअल होना चाहिए। 8 बजे कहेंगे तो 8 बजे। वो एक लाइन, एक कलर, एक ही एक एक जैसा कलर वाला एक काला मशी से ये क्या हुआ, पेन किया हुआ एक ये है, क्या कहते हैं ना, फ्लोर है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि यहाँ एक ब्लाइंड, यानी कि अनरिटन, अनलाइन एक लाइन है, वहां ही बैठना है। पास एक छोटा से एक ये स्टूल होगा, उसके ऊपर ग्रंथ रखेंगे। वो ग्रंथ को देखना नहीं, वो सामने 2 फीट आगे बैठा होगा या शायद लेटा होगा। वो जैसे पद कहते हैं वैसा ही कहना है। उसका फेस को दे ही उनका फेस को ही देखना है। उनका फेस में से जो कह रहे हैं वो रिपीट करना है। वो जितना करना है वो जब तक कहते हैं तब तक करना है। उसका भी एक क्रम है। लेकिन रिपीटेशन क्या है कि उनका जो शब्द है, उसका जो लिप्स है या उसका जो टंग है, जो भी है, वो किस तरह करता है उसी तरह ही हमको करना चाहिए, तब भी वो शब्द प्रॉपर आता है। वहां से इतना एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बाद ही आता है बाकी सब। क्योंकि पहला क्या चाहिए कि सब में चित्र लिखने के लिए कैनवास चाहिए, कैनवास के बाद ही पेंटिंग आता है। तो कैनवास का रूप में ही होता है जो भी शास्त्र। हमारा जो शास्त्र का यही विधान है कि ये एनक्रिप्टिव कहे पाएंगे, क्योंकि श्लोक या सूत्र के रूप में लिखेंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि वो हम याद कर सकेंगे,
बाद में जब चाहिए आप उसके ऊपर परिचय है तो वो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। दिस इज द इजीएस्ट वे। तो आप जो भी सीखता है और आप याद कर पाएंगे, तो आपको, हमारा मन का यही गुण है कि जो भी सोचते हैं, जो भी हम हृदयस्थ करते हैं, वो जब समय आता है तब अपने आप मन में आएगा। पुस्तकस्था यथा विद्या परहस्ते च यत् धनम कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। जो पुस्तक में जो विद्या रहता है, पुस्तक में जो विद्या रहता है, उसी तरह अन्य के हाथ में जो हमारा पैसा रहता है, दोनों कार्य के समय में कोई काम के लिए योग्य नहीं होगा। तो इसको हृदयस्थ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठस्थ कहना, ऐसा ही कहते हैं, यानी कि आप सोचना नहीं चाहिए तो भी आपको याद होना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए, वो भी एक शास्त्र ग्रंथ को पहले से अंत तक। तो यही विधान से वो सिखाते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि दो भाग है, एक पंछी का दो पक्ष के जैसे, एक स्वाध्याय और दूसरा शास्त्रार्थ। जो स्वाध्याय से उसका जो हम कहते हैं ना, जो श्लोक है या सूत्र है जो भी है, वो आप हृदयस्थ करेंगे, उसका अर्थ को व्याख्या करेंगे। यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। वो किस तरह कर रहे हैं उनके बारे में मुरलीधर जी ने बहुत अच्छी तरह बताया, तो उसके बारे में कहने का आवश्यकता ही मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन इसका जो विधि है, वो इतना ओरल ट्रेडिशन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि वो इतना एक्यूरेट होता है, उसमें कोई कई परिमिति होता है, क्योंकि लोग ज्यादा नहीं सिखा सकते एक साथ, एक मास एजुकेशन नहीं दे सकते। लेकिन एजुकेशन जो विद्या है, वो इतना मास में कितना दे सकेंगे, वो भी एक प्रश्न है कि नहीं कर पाएंगे हम। एक आदमी से दूसरे आदमी तक ही शायद दो लोग या शायद तीन लोग, जितना गुरु का बल होता है उसके हिसाब से जितना शिष्य होते हैं उनको सिखा पाएंगे, क्योंकि वो मुख को मुख से ही देखते हैं, तो मुख से ही हम विद्या सीखते हैं। तो मुख क्या है? हमारा शरीर का सब भावों को दिखाने वाला, इसीलिए हम उसको सब में मुख या फेस कहते हैं, है ना? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो मुख से होता है। तो वो मुख को जो आदमी परसीव करते हैं, उनका जो परसेप्शन का एबिलिटी जितना होता है, उसके हिसाब से गुरु को वो मुख का जो भाव होता है वो उसको चेंज करना पड़ता है। तो दो लोग रहेंगे तो दोनों को एक साथ एक जैसा सिखाना भी मुश्किल होता है। इसलिए गुरुकुल में थोड़ा कम ही होगा लोग, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है, वो प्रिजर्व भी हो जाता है। जो मुद्रा आप आगे देखेंगे तो वेद का देखेंगे तो वेद का मुद्रा के हिसाब से जो सिखाने वाला जो वेद विद्या का विधि, तो अब बहुत ज्यादा देश में नहीं है, केरल में ही लिख रहे हैं, मुझे लग रहे हैं, ज्यादा देश में नहीं है। मैं ज्यादा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है, वो मुद्रा के साथ जो सिखाते हैं वो केरल में ही रहते हैं। वो उसका जो भी विधि है तो उसको प्रिजर्व करना, दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग। इसलिए मुखामुख पठन में ये प्रिजर्व करना बहुत आता है, बहुत अच्छी तरह होता है। दूसरा क्या होता है कि जो सीखता है वो वही सिखाता है। तो जो सीखा है वो हृदयस्थ होता है, तो वो दूसरे को सिखाते, तो वो कोई चेंज नहीं होता है। उसका जो अपना परिचय है, अपना अनुभव है, वो अलग बताएगा। वो अर्थ विचार में करेंगे तो वो अलग बताएगा। तो बेसिक जो शास्त्र का जो भाव रहता है वो प्रिजर्व होता है। वही ये मुखामुख पठन का इम्पोर्टेंस होता है। उसको हमने लिखने से अच्छा है डेफिनेटली। ग्रंथ विद्या का, यानी कि ग्रंथ का रूप में जो भाव है वो भी अच्छा है, उसमें कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन जिसको
मुखामुख हुआ है उनको ही ये ग्रंथ आसानी में हाथ में आएगा, नहीं तो वो गलती से कई दूसरा अर्थ में भी जा सकता है, क्योंकि कोई डायरेक्शन करने के लिए कोई नहीं होता है ना। इसके साथ उसके बाद वो बहुत लोगों को देंगे तो किस तरह वो परसीव करेंगे वो भी डाउट में आ जाता है। तो मैं बाकी ये तीनों को एक साथ करना है, लेकिन उसमें किसको प्रायोरिटी देना है उसके बारे में कहता था कि वो मुखामुख का पठन का ही है एक। दूसरा क्या है कि इसका जो पुराना एक हाँ, मैंने कह रहा था मेरा जो विद्या था तो 2 घंटे तक स्वाध्याय होते हैं, 4 घंटे तक उसका शास्त्रार्थ विचार होता है, उसके बाद 1 घंटा विश्राम, उसके बाद योगों का योग यानी कि द्रव्य गण कषाय इत्यादि योगों का अभ्यसन। इसके बीच में रोगी आता है तो उसको देखते हैं, देखने पे दिखाते हैं कैसे देखना है, किस तरह देखते हैं, किस तरह दिखाना है, वो सब जो गुरु एक बार, क्योंकि मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस को कभी कभी एक्सप्लेनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी उनके पास बैठने पे ही पता होता है कि हम मन में जो डाउट होके रखते ना, वो अपने आप उसका आंसर ही मिलता है, उतना तो हो जाता है। और वो ऐसा साथ लेख के सिखाते हैं तो उसमें कितना फायदा होता है, क्योंकि उससे कई ज्ञान होते, सिर्फ शास्त्र नहीं होता, उसका जीवन जीवन का विधि, यानी कि किस तरह वो लाइफस्टाइल जो है, किस तरह वो बात करते हैं, किस तरह उसका जो युक्ति होता है, ये सब सीखते हैं, सिखाते हैं, यानी कि उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना वो भी सिखाते हैं। क्योंकि विद्या का अत्यंत लक्ष्य क्या है, कहेंगे तो हम कहेंगे सच को समझना, ये सब अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो कहेंगे तो औचित्य कहेंगे, यानी कि जो विवेक से वहां जो एक सिचुएशन आता है तो वहां किस तरह आपका ज्ञान है, वो ज्ञान को किस तरह वहां अप्लाई करना, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि इससे ज्यादा अच्छा कोई दूसरा भी नहीं होना चाहिए, इससे और अच्छा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी कुछ भी नहीं, ऐसा इतना परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्शन करने का औचित्य को ही सिखाते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो सिर्फ ग्रंथ से नहीं होता, वो गुरु से ही होता है। इसलिए वो सब आने के लिए वो ओरल ट्रेडिशन एक के साथ फेस टू फेस करके सीखने से ही आता है। वो एक ग्रंथ को एक शुरुआत से अंत तक सीखना ही है, एक ही गुरु से, क्योंकि एक गुरु का जो विधान है वो दूसरे का विधान से अलग हो जाता है। तो पहला जो एक गुरु से एक ग्रंथ को पूरा सीखो, पूरा सीखने के बाद आप आगे जो ग्रंथ है वो सीख सकते, और उसमें भी एक ग्रंथ को एक बार नहीं 2 या 3 बार सीखना है। एक बार सीखते हैं, उसके बाद दोबारा इसमें आता है, तीसरा बार इसमें आते हैं, तो आपका ए, हर हर श्लोक का अर्थ में बहुत नया नया अर्थ आपको मिलेंगे। ये बहुत क्या कहते हैं ना, एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये क्लियरली पता हो जाता है कि इसका जो ये इसका जो फायदा होता है, कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो मेरा यहाँ जो सीखने के लिए आते हैं ना, तो उन लोगों को यही दिखाते हैं, क्योंकि वो शास्त्र शास्त्र के रूप में ही सीखते हैं, उसमें कभी भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसलिए ये शास्त्र को यथाश्रुत सीखना है, यथाश्रुत अर्थ को भी समझना चाहिए। उसमें पहले मुरली साहब ने जो कहा उसमें थोड़ा एक शब्द भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि यथाश्रुत अर्थ सिखाते हैं पहले, जो
इसका संधि छेद वगैरह करके यथाश्रुत अर्थ कहना सीखना। तत्र रूक्षो लघु शीरक्षर सूक्ष्म चलोनिला, ये पूछेंगे मैं, आप जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं ये गुण है, नहीं ये गुण नहीं है, ये वायु रूक्ष है, रूक्ष है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, चल है। यानी कि वायु रूक्ष है, रूक्ष वायु रूक्षवान, वायु लघु है, ऐसा है, वायु का गुण नहीं है। लेकिन लोग ऐसा सिखाते, क्योंकि वहां एक ट्रांसलेशन में ये डिफरेंस आता है कभी कभी। इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है कि जब आप वो ओरल ट्रेडिशंस को थोड़ा चेंज करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हमारा जो विधि विद्या का विधान ही गुरु से ही होता है, गुरु से शुरू होता है, गुरु के अंदर अंत, गुरु में ही अंत होता है, क्योंकि गुरु होके ही वो अ, अंत तक रहता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो मुखामुख विद्या का जो विधि है उसको बेस करके ही हमारा बाकी सब विधि आगे आता है, क्योंकि एक बार मुखामुख सीखने के बाद कुछ टाइम के बाद ही कहते हैं कि व्याख्या देखो, उसके बाद कहते हैं व्याख्या देखना बंद करो, क्योंकि व्याख्या में व्याख्याकार का एक विशेषेण आख्या, विस्तरेण आख्येति, विकृतेन आख्येति च वो भी हो सकता है। ओके, तो व्याख्या का अर्थ किस तरह होता है वो आप जब सीखेंगे तब आपका बुद्धि के हिसाब से हो जाता है। तो एक व्याख्याकार का अर्थ में ही रहना वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए एक स्टेज तक व्याख्या नहीं देखना, क्योंकि व्याख्या देखने के लिए लायक नहीं है, इसलिए नहीं। उसके बाद व्याख्या देखना है, उसके बाद व्याख्या को छोड़ के अपने के हिसाब से सीखना है। वो अष्टवैद्य परंपरा का भी एक यही विधान है जो अष्टवैद्य परंपरा में थोड़ा सुशिक्षित था। मैं उसके बारे में भी कहता हूँ कि उसका वेद वेद अध्ययन का जो कहते हैं मलयालम में मुतलोरा मुतलोरा कहते हैं, वो एक बार होता है। यानी कि वेद का अभ्यसन थोड़ा ही होता है, ज्यादा उसमें टाइम नहीं देते, लेकिन सिखाने का तरीका यही है कि 6 साल से शुरू होता है कि विद्या का अभ्यसन कहाँ तक होता है वो जब तक कर सकते उतना कर सकते, लेकिन एक सुशिक्षित विद्या का विधान ऐसा है कि 6 साल में होता है। तो 6 से 12 या 15 साल तक जो हमारा माइंड का जो एबिलिटी है वो क्या है कि बाय हार्ट करना आसान होता है, तब तक वो जो सीखना है वो सब सीख जाता है। यानी कि उनका कैनवस उसका खूब तरीके में उसके अंदर होता है। उसके बाद हम कहते हैं टीनेजर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां क्या होता है कि उन लोगों का जो बुद्धि जो होता है वो प्रश्न का, यानी कि प्रश्न पूछने का तरीका शुरू करते हैं। तो वो शुरुआत है उसका। जो बच्चा एक बार पैर पे अपना पैर पे चलने लगता है तो कभी कभी गिर जाता है, ऐसा ही उनका मन का जो क्वेश्चन पूछने का, यानी कि प्रश्न पूछने का या एनालिसिस करने का जो मेथोडोलॉजी में भी उसको थोड़ा इधर उधर जाता है ना। तो उस समय उसको विचार पूर्वक एक डायरेक्शन देंगे तो वो शास्त्र का अर्थ सीखेंगे। इसलिए 16 तक वो जो भी बाय हार्ट करना है, अष्टांगदेय है तो पहला संस्कृत का सिखाने का तरीका वो तो रामदास जी कहेंगे, मैं कहने का आवश्यकता ही नहीं है उसके बाद के बारे में कि सिद्धरूप अमरकोश इस तरह सिखाते हैं। और साहित्य होता है किसी एक साहित्य के अंदर तो काव्य व्युत्पत्ति होता है, उसके बाद थोड़ा व्याकरण और तर्क, काणादम पानीयम सर्वशास्त्रोपकारकम कहते हैं। यानी कि काणाद यानी कि न्याय वैशेषिक को कहते हैं, यानी तर्क को कहते हैं, वो बुद्धि का लैंग्वेज है। तो पाणिनीय जो दो आदमियों के बीच में कन्वर्सेशन करने के लिए का जो लैंग्वेज है, दोनों सीखना है तो तब भी आपको जो सीख गया है कन्वे कर पाएंगे वो वैसा ही।
तो इसलिए ये दोनों सीखना है, सब शास्त्र सीखने के लिए ये सीखना है। उसके बाद ही इसका जो, तब तक वो बाय हार्ट किया होगा, जो ग्रंथ सीखना है वो सब बाय हार्ट किया होगा। उसके बाद उसके बारे में शास्त्र विचार करते हैं। और इसका जो अष्टवैद्य जैसा जो परंपरा जो था, उनका एक एडवांटेज क्या था कि वो जो बच्चा पैदा होता है वो बोर्न इनटू साइंस कह सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही वो दिखता है इसका जो शास्त्र का परीक्षा, तो वो उसका फल और उसका सीक्वेंस ये सब वो सीख जाता है। तो वो आसान होता है उनके लिए कि इसके ऊपर डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आजकल आजकल नहीं, ये सब काल में ऐसा ही होता है कि क्या कहते हैं कि दृष्टकर्मता निसंशयकराणाम। दृष्टकर्मता यानी कि जो कर्म दृष्ट होता है, यानी कि कर्म करके उसका फल दिखता है, तो वो संशय रहित होता है। वो आयुर्वेद में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि दृष्टकर्मता बहुत कम होता है, इसलिए उसमें वो लोग थोड़ा पीछे जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में वही सबसे अच्छा बात है, क्योंकि दृष्टकर्मता बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आसानी से सीख जाता है। लेकिन पुराने काल में ये जो ट्रेडिशंस था उसमें वो बोर्न इनटू साइंस होते, तो जो शुरुआत में से बचपन से ही वो उसका पिताजी या दादाजी जो भी है वो जैसे करते थे वो दिखते हैं, तो उसको डाउट नहीं होता जो उसका फल। और वो जो सीखने के बाद, शास्त्र का अर्थ सीखने के बाद उनको कोई संदेह ही नहीं होता है, क्योंकि संदेह का आवश्यकता नहीं, दिखता है वही सीखता है। और उसको और क्लैरिटी करने के लिए हम भाषा यानी कि संस्कृत और तर्क से उसको परिपोष करते हैं। तर्क से क्या होता है कि उसका जो रैशनल थिंकिंग होता है वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री जो क्यों सिखाते हैं, क्योंकि मेडिसिन सीखने के लिए ये दोनों चाहिए, नहीं तो मेडिसिन का जो बेसिक आइडियाज कभी भी नहीं समझ में आएगा। इसी तरह आयुर्वेद का जो भी शास्त्र है, शास्त्र का जो मूल तत्व है वो सब वो हमारा दर्शनों से ही होता है। तो दर्शनों का सूक्ष्म ज्ञान जितना होता है उतना अच्छा होता है। उसमें कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए, वही कहते हैं कम से कम न्याय होना चाहिए, जितना होता है उतना अच्छा है, ऐसा कहते हैं। तो यही विधान है। और ये विधान में कभी कभी न्यूनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं ले सकते, लेकिन जो लेते हैं वो खुद एक कॉलेज होता है, क्योंकि जो सीखता है ना वो एक पूरा एक कॉलेज होता है। और उनको बाद दूसरा गुरु के पास जाके भी सीख सकते हैं। तो बहु गुरु का बहु तरह का गुरुओं का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और ग्रंथों का भी ऐसा ही होता है कि एक ग्रंथ सीखने से कई ग्रंथों का सीखने का जो तरीका आता है, यानी कि एक ग्रंथ सीखने से अन्य ग्रंथ भी सीखा हुआ ऐसा हो जाता है, तो वो सीखने का जो विधि है वो बंद, यानी कि सीखना बंद कर सकते, यानी कि जो सीखा हुआ ग्रंथ और नहीं सीखा हुआ ग्रंथ दोनों एक जैसा है, तो वो सीखना स्टॉप कर सकते। इसमें दोनों साइड में अर्थ आता है ना। तो वैसा ही सिखाते हैं। तो पहले हृदय सीखते हैं, उसके बाद संग्रह सिखाते हैं, दोबारा हृदय सिखाते हैं, और चाहिए तो चरक का चिकित्सा और सुश्रुत को भी थोड़ा सिखाते थे। ये एक परंपरा है। और उसके साथ साथ केरलीय ग्रंथों का भी परिचय उसके साथ साथ होता है। दिस इज द टोटल सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ मुखामुखा पठना। इसको बाद में क्या होता है कि यही तरीका होता है बाकी सब विद्या जो भी केरल में जो मैंने देखा है, संस्कृत विद्या का जो भी विद्या है वो सब इसी तरह एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेल फॉर्म रूप में जाता है। क्योंकि विद्या जो होता है वो एक पद्धति के बिना ठीक नहीं होता है। ओके, इतना ही है। इतना इतना कहने पे मैं छोड़ता हूँ। नमस्ते। Thank you very much, Nambudiri sir.
Actually, Agnivesan sir, you would have heard the speech of both experts. And you would have seen, even though we are now in university education, the basic nature of Keralites to learn from oral tradition is not lost. It is still in the minds of the people. Even in the colleges, we follow the Samhita Parayana in the morning. It's in a Definitely. beautiful way. First, we will recite the sloka, then we will say the Padacheda, then we'll be having the Vigraha Vakya over there, and Andalinga Vibhakti Vadanam we will tell. Then we will go for the Anvaya, then we'll go for the meaning. The same pattern we are following now, even now in our colleges, for the purpose of the students to develop the power of keeping the subject in their mind, actually. When it is there in the mind, it will be very easy, because our science is actually Lakshana Shastra. Lakshana Shastrasya logical thinking, that is very much needed in the brain itself. So it connects 1,000 points from the beginning of the textbook to last of the textbooks, not a part of the textbook. This is the advantage of by-hearting, or you don't simply call it as by-hearting. Kantastikaranam is a terminology, is a very beautiful terminology, because whatever you learn is not in your brain, it is ready to come out of your kanta. That's why it is called Kantastikaranam, actually. Kande tishtadidi kantastaha. Whatever be the knowledge, that which is there in your kantha, to let it come out. There is no process of smarana is happening such a way when you make it, that is called Kantastikaranam. It is not simply memorizing. That translation is not at all good for Kantastikaranam. Kantastikaranam is actually that which is there in your throat. You have to tell, it will come out. That's all. When you see something through your eyes, it comes out through your mouth. So it connects Nidana, it connects Sutrasthana, it connects Chikilsasthana, it connects Kalpasthana. Everything will be at a time, even up to Rasayana, Vriksha Chikilsa. And you are using the proper medicine at the proper time. This is the advantage of keeping the textbook in your brain. This methodology is still in Kerala, in the colleges, even the teachers who are following it. They cannot forget it, because it is the methodology developed by best scholars of the Ayurveda in Kerala. If you ask the methodology of Kerala, this is the realest, perfect methodology of Kerala. And one more thing I will tell you, only 2 sentences. Time is very late now. I'm sorry, I'm taking a lot of time. No problem. Actually, before in the olden days, only first Vyagarana will be taught, sir. First language will be taught. Then Shaddarshana will be taught. Then only they will enter into the Ashtanga Hridaya. Because when you learn the sloga, the Padasambat will you there, and the logical thinking will be there by learning the darshanas. And when the sloga starts, the teacher does not have to give any meaning. Automatically, the learner himself will get the meaning. This was the oral tradition of old Kerala, and it was there in the blood of every Keralite. Every Keralite. Let them study university education, let them take modern PhD, but this culture is not lost from them, because it is the life of the Kerala. Still we are following it. In my college, I am following it. In everywhere it is being followed. And you know the wonder, one, Ayurveda is considered as Veda by the Keralites. How Vedic learning is, the same methodology was formed in Ayurvedic learning also. That is the methodology in Kerala state. That is why Ayurveda is still as Ayurveda, and the commentaries are written in Malayalam or whatever be the language. Everything is based on this methodology only, this logical thinking only. Okay. And as Brahmadattan sir told that you read whenever you are mature enough to read the Vyakhyana. After that, don't stick back to the Vyakhyana. You create your own Vyakhyana in your brain. It automatically comes. That is the advantage of the learning methodology in Kerala, and it is being followed still in Kerala. And proud to say that every college in Kerala is having the habit of Parayana in the morning or in the classes. Only after that they will be teaching. Still, in every Nagabhushan sir is there. He is from one of the college principal. Now he is in Delhi. I think he will tell 2 words to you. And in his college also, he developed this habit of reading the Samhita in the colleges. That means it is the tradition of Kerala. Nagabhushan sir is basically from Andhra Pradesh, but his studies mainly happened in Kerala. He developed this thing such a way, everyone who comes to this methodology automatically will adopt, because it is the methodology that will enlighten your brain in such a way that
you can connect so many parts at a time. Okay, sir. This is Kerala methodology. Now I am giving the chance for Arathi to speak few words. After that, Nagabhushan sir, I request Nagabhushan sir to speak few words after Arathi. I think Arathi, you can present it and you can make it. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please, please. So Nagabhushan sir, please don't leave. You must be there. You must speak 2 words. Chandigiri principal. Nagabhushan sir was the Chandigiri principal. Now he is principal in a college in New Delhi. Wonderful Ayurveda. I respect him a lot, like Murali sir and Brahmadatan sir, and etc., because he loves Ayurveda. That is the reason. Okay. Now, Aridhi, please. Thank you, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। ओम नमः शिवाय। इस सत्र में मौजूद सभी गुरुजनों को मेरी विनम्र प्रणाम, खास करके मुरली सर को, रामदास सर को और ब्रह्मदत्तन सर को भी नमस्ते। मैंने अभी अभी एकेडमिक फील्ड में काम करना शुरू किया है, तो अभी मैं एक स्टूडेंट बन के जो आज का टॉपिक है उसमें अपनी अपना पॉइंट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। नहीं, प्रेजेंट नहीं, बोलना चाहती हूँ। तो मैं अपनी पीजी और यूजी दोनों अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद से लिया है। मुझे तो वो फैमिली बैकग्राउंड, आयुर्वेदिक फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो एक्चुअली एकेडमिक टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में मुझे अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद के बाहर का कुछ एक्सपोजर नहीं है। फिर भी मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो केरला में बियॉन्ड द कॉलेज बैरियर सब में यूनिक है। जो ट्रेडिशन जो फॉलो करते आ रहे हैं वो यूनिक है। तो मैं एक ऐसे बैच के हिस्सा हूँ जहाँ एनसीआईएसएम के प्रोफ सिस्टम का फॉलो करते थे। प्रोफ सिस्टम 1.5 years जो काफी अच्छा था, तो अभी वापस आया है। तो सिलेबस के बाहर जो अष्टांग हृदय का डिटेल में जो पढ़ाते हैं और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, खास करके नित्य पारायणम, वो नित्य पारायणम ट्रेडिशन जो है सो स्टूडेंट्स करते हैं और स्टूडेंट्स को टीचर्स करवाते हैं। नॉट ओनली अष्टांग हृदयम, all the Brihatrai, Raghutrai during UG level, it really gives a strong basis of knowledge for the students even from the UG level. So काफी कॉन्फिडेंस रहता है एक यूजी ग्रेजुएट को एक पीजी ग्रेजुएट की तरह जब बाहर आते हैं कॉलेज से। यूजी ग्रेजुएशन के बाद जो बाहर आते हैं तो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने के लिए उनको ना बहुत अच्छी तरह से वो बेस मिलता है, यूजी लेवल में ही बेस मिलता है, क्योंकि वो संस्कृत टीका के साथ जो अष्टांग हृदयम को पढ़ने का जो ट्रेडिशन है वो केरल का एक यूनिक ट्रेडिशन है टीचिंग मेथोडोलॉजी में। तो मैं एक एग्जाम्पल कहना चाहूंगी कि अगर केसी में इवन इफ स्टडिंग सम कॉन्सेप्ट इन काय चिकित्सा, इनकॉर्पोरेटिंग तंत्र युक्ति, incorporating the padartha jnanam, padachedam, even studying the anvayam at that time, even the application of Sanskrit Vyakaranam during the KC classes. See, when we see from the syllabus completion point of view, what is actually the need of all those things? So we need to study the chikitsa of whatever we have studied in the Roga Nidana. It's just the continuation. So ऐसा नहीं होता है केरला में। I can confidently say that the teaching tradition of incorporating everything right from the Sanskrit language, whatever we have studied from the first day of the Ayurvedic academic career. So whatever we have studied from the first day, we will not be in the sense the teachers will incorporate everything from the first day of first year towards till the final year. ऐसे होते हैं classes. Not only in the subject of Kaya Chikitsa, the same methodology is followed even in the other clinical subjects in the final year. So we'll think, so it is the beauty of that tradition. So we are getting that revision of the every basics, even the Tantra Yukti. We studied Tantra Yukti and Ramdas sir has taught Tantra Yukti even during the last year of the PG. So, I personally wish, I completely wish the oral tradition of the
teaching or the Gurukula system of teaching, where the student gets everything from the Guru Mukha. So that glorious past of that Samhita teaching beyond the syllabus should come back in the future. So the correlating so many things, so many concepts at a time for a particular topic, it's really what a students need and student wishes for. So all the student wishes, a teacher should teach him or her how to think or how to correlate things. See, our method of teaching or the mode of teaching was never confined to a syllabus. That was the beauty in that. All of the gurus, whoever I was fortunate enough to get the knowledge from, all of them taught how to think first. So, how to read the sutras and how to interpret the meanings more than in 10 ways from a single sutra, and how to read in between the padas of the sutra. So, that was the main the thing which followed throughout the academic life. So I really wish the concept of this teaching beyond the syllabus at UG level to come back in Ayurveda academic in future, irrespective of the geographical barrier, because Ayurveda is not only a major thing. It should not be a major thing not only to Kerala, but I think it should be, India should be the hub of Ayurveda in future. Not every time everybody speaks, the Kerala and Ayurveda are always they have a connection, Kerala and Ayurveda. But in future, the India and Ayurveda, it should be like that in the academic way also. So at least this teaching beyond syllabus or the Nitya Parayanam of the Samhitas or the Mula Granthas, it should be a habit in the future. But nowadays, because of the demand, I'm sorry, I'm saying it in a public platform, because of the demand of the curriculum or what, this PPT presentations, the fashion of PPT presentations are very more during the PG curriculum as well as in the teaching curriculum. So कहीं ना कहीं ये PPT के चक्कर में जो ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ टीचिंग द आयुर्वेदा कहीं छूट रहा है. जैसे कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ऐसा आजकल वो हमारे वो केरल का जो यूनिक ओरल ट्रेडिशन वाला गुरुकुलम सिस्टम वाला एजुकेशन सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है, आई थिंक इट ऑल्सो नीड टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द that for the future. I don't know, because the demand is getting, the capsule type of teaching is preferred by the students, and वो संहिता जानने का जो इच्छा होते हैं स्टूडेंट्स को, वो बहुत कम होते जा रहे हैं. तो वो देख सकते हैं ईयर बाय ईयर दैट हुनर जो अंदर है संहिता को मोर जानने के लिए, वो साल में कम होते जा रहे हैं. So we need to preserve those things for the future also. I'm not against the PPT presentation, but I do a lot of PPT presentation. But मैं अंदर से चाहती हूँ कि संहिता खोल के सूत्र सभी सूत्रों पारायण करके बच्चों को पढ़ा सकूं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी होता नहीं करिकुलम के डिमांड से. So बस इतना ही. Thank you, sir. Thank you, Aradhi. Now I invite Nagabhushan sir to speak 2 words. After that, one more scholar is there with us. He's a PG scholar, Bharadwaj. Dr. Bharadwaj is a son of Prasad sir. He will also speak 2 words, sir, and we will close that one. Our Ram Verma sir is there. I don't know. Sir, if possible, first Nagabhushan sir, please. 2 words, sir. Om Namah Shivaya. Thank you very much, sir, Ramdas sir, and Pawan Kumar sir, and Agnihotri sir, Murli sir, Brahmadattan sir, and all great people. Yes, it is a great tradition. I think it is a tradition of India, but Bharat, somewhere our Arsha Parampara we forgot, and Kerala में तो still किसी एक कोने में इसका तो अभी जीवन है. हम उसका वो परंपरा को कंटिन्यू कर रहे हैं. जैसे रामदास सर बोले, बेसिकली मैं तो हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ. यस, आई एम प्राउड ऑफ माय बर्थ प्लेस, मातृभूमि. एंड स्टिल मैं जब मैं पढ़ता था, मैं ये सीखा था कि
कैशोर गुरु क्यों यूज करते बोलते हो, उसमें गुड़ुचि है। एंड आरोग्यवर्धिनी क्यों यूज करते बोले तो उसमें कटकी है। एंड महाकल्याण गुरु तो क्यों इतना है बोले तो उसमें तो घृष्ट क्षीर है। ऐसा किसी एक योग का एक इंग्रेडिएंट हमको बता देते इसका इम्पोर्टेंस ये है बोल के, हम ऐसे ही सीखे थे। एंड व्हेन आई वेंट टू केरला फॉर माय हायर स्टडीज पीजी, वहां तो मुझे यूजी बच्चों को देखकर ऐसा लगता था वो तो श्लोक, योगों का श्लोक ही ऐसा बोल देते थे। That is the way that what we have to learn. Actually, holistically, whole thing we have to learn. तभी होता है, मगर in other places somewhat we lost, but in Kerala the tradition is there, and as Ramdas sir was telling, and Ramdas sir is keeping the tradition in his college, and we are very grateful to him, and we follow him also. And regarding this संहिता पारायण, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि संस्कृत जाने नहीं जाने, फिर जो संस्कृत जो संहिता पारायण में इन्वॉल्व होके वो पारायण करते हैं ना, वो सुनने वालों को भी मन वो शांत करते हैं। और वैद्य हो जो भी हो, जहाँ शांति है वो अमृत होता है। तो वो अमृत का जो उत्पादन होता है ना, संहिता अध्ययन से ही होता है। दैट इज अ बेसिक स्टेप ऑफ लर्निंग आयुर्वेदा। And yes, in Kerala we are having, and we have such role models are there. That is the great thing. Role models are there to follow. That's why we are able to follow. But I can say that now, due to this globalization, etc., and the community, whatever the media we are having, कहीं ना कहीं हम वो ट्रेडिशन को शायद भूल रहे हैं क्या? बिकॉज केरला में भी जो टीचर्स है वो बाहर भी पढ़ के आ रहे हैं। sometimes they may be losing that tradition. So मुझे still what I say is we are having that great tradition, we have to follow it, and this is the such type of platforms today we are having now, that the thought exchange should be there. एंड मैं केरला से अब इधर दिल्ली के पास आया हूँ, मैं इधर वो करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। यस, cultural difference and thought differences and many things are there, and sometimes I become frustrated. Whatever experience we were having there, we are unable to put into live here. ऐसा कुछ लगता है। Still what I say, if the in our heart our sankalpa is there, sankalpa shuddhi is there, sankalpa bala is there, definitely we can realize it. And with these few words, it is a great platform, sir, and we can spread that great thoughts. And thank you very much. Now it is 11 o'clock. Let me conclude. Om Namah Shivaya. Thank you. Om Namah Shivaya. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bharadwaj, can you speak few words? Namaste, sir. I hope I'm audible. Yes. So respected Acharyas in the Zoom platform. I am also a student of Ramdas sir, so I was easily able to reflect what and all sir was telling. And after all these words from the experts, I don't have much to add, but one small point I wanted to add was regarding the slokas. So right from the beginning, from the definition of Ayurveda is not only focusing on Hita and Ahita, but also on Sukha as well. So the learning also should be like that. Currently, I think in the syllabus, it's like we are only focusing on Hita, but along with that, the teaching methodology or the learning process should have that Sukha. And for that, slokas is one best medium, I guess. So because I got an exposure from my grandfather, my gurus in my childhood regarding Akshara Sloka, I was very easy to relate it to the slokas of Ashtanga Hridaya. So the entire process of learning these slokas is actually fun. When you start to understand the chandas and you start to play with it, it's like a game. So that process is very much fun. So that is one main thing I wanted to add when the thing of slokas. Then when another thing was going back to the basics. So even after learning Sanskrit, so Sanskrit Kanadam Paniniyam Brahmadittan sir had told that. So that two things are very important, and that is a very big missing point in current Ayurveda, I guess. Though it is still preserved in Kerala, I'm proud to say that it's still preserved in Kerala.
And like the condition of Ayurveda these days is that Ayurveda is one of the main degree that it is actually a very sad thing to say. Ayurveda is one of the probably the only degree in the world that can be completed without knowing the original language in which the text has been written. So that is actually a very bad thing, but still we have to change that. And we have to do that introspection. How good are we in understanding the right context, the right meaning of words? So that is another important thing. And currently, post-COVID, I think there has been so many beautiful recorded videos which are available in YouTube by great acharyas, which has made the learning process very easy. And while we are learning from them, we are listening to them. It is almost similar to the Tirthartha Shastrartha that we get in, that is told as a guna for Bhishak among the Chatushpada. So that Tirthartha Shastra, you are directly learning from the Guru Mukha, even if you are not able to go physically to the Guru. This platforms like these have enabled the facilitation of such Guru Mukha learning. And I hope we all can use that for the best of the science. Thank you for this opportunity. Thank you very much. Thank you. Agnihotri sir, Ram Verma sir is there? Ram Verma sir, is there? Rambir Sharma. Rambir Sharma, he is there, yes. Sharma. Yeah. आदरणीय प्रोफेसर रामवीर शर्मा सर, आपका आमंत्रण है, आप कुछ अपने विचार रखिए, स्वागत है जी। कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं, निशब्द इतना शुरुआत हुई है कहने की। जी जी जी, अभी तो कहने की शुरुआत हुई है, तो ये कर्ण शब्द परंपरा के अंतर्गत। यस, इतना अच्छा सेशन है सर। मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। आरती जी ने, मैंने अभी कमेंट किया था, आरती जी ने इतना अच्छा शब्द यूज किया है कि जब से CCIM ने अपने सिलेबस में, करिकुलम में हम लोगों को दबाने की कोशिश की है, उसके बाद में आयुर्वेद बर्बाद हुआ है। मेरे 30-40 साल के समय में देखूं मैं, तो आयुर्वेद को बहुत ज्यादा बर्बाद अगर किसी ने किया है तो NCIM और CCIM ने किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे उत्तर भारत में बाहर के आक्रमणों की वजह से हमारे आयुर्वेद का बहुत बड़ा क्षय हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि केरला के हमारे पंडितों ने, अपने आयुर्वेद साधकों ने आयुर्वेद को जैसा था वैसा बना के रखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। श्रुते पर्यवदातत्वम, श्रुति ही है, आयुर्वेद वेद ही है, तो उसको सुने बिना तो उतारा ही नहीं जा सकता। और कान जो है आकाश की प्रथम इंद्रिय है, सबसे सूक्ष्म है, आकाश सबसे सूक्ष्म है। तो अगर आदमी सुनता है, कर्णेंद्रिय के द्वारा जाता है, तो ब्रेन के अंदर बहुत अच्छी तरह से फीड होता है और फिर उसको रिसाइकल करके उसको स्मृति में लाता है। तो कर्ण के द्वारा सुने बिना तो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए पहला शब्द जो आचार्य चरक ने लिखा है, श्रुते पर्यवदातत्वम, श्रुति ही लिखा है उसने। श्रुत का मतलब है ज्ञान ही नहीं है, जिसने सुना हो, सुना हो का मतलब ज्ञान जिसको हो। और पढ़ाने की प्रक्रिया जहां तक बात है, तो आचार्य चरक ने विमान स्थान में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मुझे तो इतना अच्छा लगा मुरली जी का भाषण में। तो कह रहा हूँ ना मैं, यहाँ कोई बोलने की बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सुनने की बात है, शिष्य के रूप में। मजा आ गया सर, मजा आ गया। और इसलिए मजा आ गया कि मेरी जो संस्था, मेरा जो रोजी रोटी है आयुर्वेद, वो केरला ने बचा के रखा है एक छाती के रूप में। क्योंकि उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजों के शासन की वजह से, मुगलों के शासन की वजह से हमारी इस विद्या को बहुत क्षति पहुंची है। आपने बचा के रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा इस तरह के सेशन, बिना संस्कृत के आयुर्वेद कहाँ है? बिना संस्कृत के आयुर्वेद नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक आयुर्वेद ही ऐसी डिग्री है जो आयुर्वेद की भाषा को पढ़े बिना आप डिग्री प्राप्त कर सकते हो। वाह वाह, क्या बात की है। हकीकत में ऐसा चल रहा है, लोग PG कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, संस्कृत के श्लोक का पता ही नहीं है, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पता नहीं है। आयुर्वेद के सिद्धांत के बिना टेस्ट ट्यूब में आयुर्वेद को डाल के PhD कर रहे हैं। सो सॉरी सर, आपने बहुत अच्छा सेशन रखा। और मुझे लगता है आयुर्वेद के जो भी मैं अपने IRES से रिक्वेस्ट करूंगा
कि पंचकर्म अपने उसका केरला का बहुत ही अच्छा है, इस पे एक सीरीज शुरू करें, इसमें बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेद की बात करें तो मुझे इतना अच्छा लगेगा। और देखिए बीज कितना भी कहीं भी छुपा हो, धीरे धीरे करके फैलता है। यहाँ उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में पूरी तरह से आयुर्वेद का पंचकर्म खत्म था, और धीरे धीरे करके केरला में जो बीज पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे करके उसने अंकुरित हुआ। और आज जितने भी इंस्टीट्यूट आयुर्वेद, उसके आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट हैं, आइया हो, एम्स हो, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सब में पंचकर्म का वो जो बीज पड़ा था वो अंकुरित हुआ और आज फल दे रहा है, और भविष्य में ये वट वृक्ष बनेगा। मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आयुर्वेद को आपने बचा के रखा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you very much. We, the Keralite, promise that we will keep the purity of Ayurveda forever. And being a Sanskrit teacher from my part, I am trying my level best to keep the Sanskrit learning and teaching doctors and teaching so many people. Padacheda, Samasa, Anvaya, Artha, Shabdartha, Nirukti. Even from the Nirukti I am teaching now. If God permits, let the Ayurveda remain as Ayurveda, not in test tube. We will all try for it, sir. From Kerala, it will be 100% promise. We will try our level best. Bharadwaj now he is learning in National Institute, but he is a lover of Sanskrit. He is a lover of Ayurveda. Those all will be working. Now, Aradi, she told that everyone will work on that one. Future doctors will work for Ayurveda and Sanskrit without losing the purity of Ayurveda. Thank you very much for the stage. Agnihotri sir, please. Thank you so much. Thank you so much. It's not important that Ayurveda is written in Sanskrit, and for that one has to learn Sanskrit. Sanskrit itself is the language. When one will be in position to learn and understand, then he will be in position to learn and understand the principles of Ayurveda, and he will be in position to get the essence and elixir of Ayurveda, and then the treatment part. I got really very thrilling informations like Mukha Mukham teaching. In North India, it is said as a Karna Shrabya Parampara to some extent. But our overall work is that I am not in position to elevate any person. It may be NCISM or CCIM. The fact is that only the Varanasi Sanskrit Vishwavidyalaya is there, where MD and PhD thesis is compulsorily written in Sanskrit language. There is one very important point. At least they are maintaining. But here, what I found that the recitation of Sanskrit shlokas in the stated manner is equal to the chanting of Vedas and the Richas of the Rigveda, etc. This is what we have to learn. We have to consider and take an oath that our Ayurveda is also Ved. So we have to behave with them as a Vedas. So Hitaitam Sukham Dukkham Ayustasya Hitaitam Mananchitatya Yatroktam Ayurveda Sa Uchyate. So we have to give the soul in the words. Then it will be accepted like this, that somebody is reciting the Ayurveda. Otherwise, it's very difficult. And the point which Arti Prabha touched, really, I appreciate and I congratulate her that even so beginning age she uttered like this, that this pen drive and PPT is really running down the essence of the teaching, learning, and getting the part. We prepare PPTs from text exactly, but we have to have a command over the language and knowledge to present. I used to say that I don't use pen drive. I used to brain drain. It is from our brain that it has to be drained whenever we are addressing to any audience. Then only the pleasure will be there. So very much thanks to all the great speakers and learned persons of Kerala. They really revitalized the concept of teaching, learning of Sanskrit in Ayurveda in the terms they are maintaining there in their state. So thank you so much, sir, to all the guests. We are grateful to Ramnath ji for introducing such legends. Really grateful, really grateful. No other words. Jai Ho. Jai Ho, Ramdas ji ki Jai Ho. Pawan Kumar sir, your old speaker Vaishnavi is there present. All they are up to 11:11. They are waiting. They are sitting here and they are listening your seminar. I told them to join.
because Ayurveda has to exist as Ayurveda forever. Thank you very much, sir. Pavan sir. Thank you very much, Vaishnavi madam. Thank you very much, Uma madam. And thank you very much, Megha madam. And everybody, thank you. Thank you very much. It is 11:15. Thank you very much for your presence till the end. It's our It's your routine. greatness. It's your greatness. Ramdas ji, it's your Good night. greatness. Good night, sir. All the best. Good night, sir. Thank you. I extend all our thanks to all the guest speakers of both the webinars, and also thank you so much. All regards and good night. Namaskar.